Assalamu alaikum friends, welcome to our YouTube channel School of Biology. Today we are going to discuss the most important questions about cleavage. क्लीवेज बियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। लिहाजा आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह तैयार हो जाएं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्लीवेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ऑप्शन ए स्वैमरडम, ऑप्शन बी स्प्लेंजनी, ऑप्शन सी F.R. लिली, ऑप्शन डी लीवानोक। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए स्वैमरडम। इन 1738 के अंदर उसने क्लीवेज को डिस्कवर किया फ्रॉग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मैमल इज ऑप्शन ए क्लीवेज, गैमेटोजेनेसिस, गैस्टोलेशन, फर्टिलाइजेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, द क्लीवेज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कि क्लीवेज किसके अंदर पाई जाती है? ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी अनडिवाइडेड सेल, ऑप्शन सी एग, ऑप्शन डी आफ्टर गैस्ट्रोला स्टेज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लीवेज इज फाउंड इन द जाइगोट। क्वेश्चन 4, एग, और यहाँ पे जो एग है ये फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट की बात की जा रही है। एग अंडरगो क्लीवेज एंड फॉर्म। ऑप्शन ए मरूला, ऑप्शन बी ब्लास्टोला, ऑप्शन सी गैस्ट्रोला, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एग अंडरगो क्लीवेज एंड फॉर्म मरूला। क्वेश्चन 5, cleavage in the bird's egg is known as option A equal and holoblastic, unequal and holoblastic, discoidal and meroblastic, superficial and meroblastic. So the correct answer is option C, discoidal and meroblastic cleavage is found in bird's egg. Question 6, cleavage having incomplete division of egg, option A is called as holoblastic, meroblastic, meridional, spiral. So the correct answer is option C, कि वो क्लीवेज जिनके अंदर इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ एग हो तो उसे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं और ये बर्ड्स के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन 7, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज ऑप्शन ए पार्शियल क्लीवेज, कंप्लीट क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, equal cleavage. So the correct answer is option A. Meroblastic cleavage is known as partial cleavage. Question 8, pattern of cleavage in frog egg is option A holoblastic, meroblastic and unequal, meroblastic, holoblastic and unequal. So the correct answer is option D, holoblastic and unequal. Question 9, in indeterminate cleavage, the fate of blastomere is fixed at which stage? Option A blastola, option B gastrulation, option C 16 cell stage, option D 32 cell stage. So the correct answer is option A, क्योंकि ब्लास्टोला के अंदर प्रिजम्पटिव एरियाज या इमेजिनरी एरियाज पाए जाते हैं, इसलिए फेट डिटरमाइनिंग स्टेज ब्लास्टोला है। क्वेश्चन 10, in which animal the cleavage is restricted only to a small part of nucleus and cytoplasm in animal pool? Option A cockroach, option B frog, option C chick, option D rabbit. So the correct answer is option C, चिक के अंदर इस तरह की क्लीवेज पाई जाती है और इस क्लीवेज का एक स्पेशल नाम है, इसे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। क्वेश्चन 11, in frog equal holoblastic cleavage is not possible or it is not found due to option A dark pigment in the animal pool is present, heavy yolk in the vegetal pool is present, yolk concentrated in the center, nucleus is asymmetrical. So the correct answer is option B, due to presence of heavy yolk in the vegetal pool. Question 12, when blastomere symmetrically placed around the polar axis, such cleavage is option A biradial, option B discoidal, option C spiral, option D radial. So the correct answer is option D, it is called as radial cleavage. Question 13, when cleavage extends from animal pole into vegetal pole and does not bisect the egg equally, it is known as meridional cleavage, equatorial cleavage, holoblastic cleavage,
vertical cleavage. So the correct answer is option D. It is known as vertical cleavage. Question 14. The ratio of nucleus to cytoplasm at the beginning of cleavage is option A very low, very high, normal, a bit higher than normal. So the correct answer is option A. क्लीवेज के स्टार्ट पे ये रेशो लो होती है और एंड पे काफ़ी हाई होती है. Question 15. In teleost reptiles and birds, the cleavage is option A equal holoblastic, unequal holoblastic, incomplete meroblastic, complete meroblastic. So the correct answer is option C. It is incomplete meroblastic. Question 16. During cleavage, the fertilized egg is option A does not divide but only increase in size, divide repeatedly but without growth, divide repeatedly with growth, and option D none of these. So the correct answer is option B. It divides repeatedly लेकिन इसके अंदर growth absent होती है. Question 17. The type of cleavage found in mammals, option A holoblastic, meroblastic, discoidal, none of these. So the correct answer is option A, holoblastic cleavage. Question 18. If unfertilized egg is pricked with a needle, it will. केस के अंदर कौन सी चेंजिंग आ जाएगी? ऑप्शन ए it will die immediately, it will start dividing, option C it will remain undivided, option D it will transform into tadpole at faster rate. So the correct answer is option B कि जैसे ही आप उसे नीडल से प्रेक करेंगे तो उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह की डिवीजन को आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस या इंड्यूस्ड पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं. Question 19. In determinate cleavage, the spindle is option A vertical, option B subequatorial, option C horizontal, option D oblique. So the correct answer is option D. It is oblique. Question 20. If cleavage furrow divides the zygote completely into two, then it is known as option A radial cleavage, equatorial cleavage, meroblastic cleavage, holoblastic cleavage. So the correct answer is option D. It is known as holoblastic cleavage. Question 21. In humans, the cleavage start in option A uterus, fallopian tube, vagina, none of these. So the correct answer is option B. It is fallopian tube. Question 22. After which stage the cleavage stop? Option A morula stage, after blastula stage, after gastrula stage, at any time. So the correct answer is option C. It is start after fertilization and stop after gastrula stage. Question 23. Cells which are formed as a result of cleavage. के क्लीवेज के नतीजे में कौन से सेल्स बनते हैं? ऑप्शन ए माइक्रोमेयर, ऑप्शन बी ब्लास्टोमेयर, ऑप्शन सी मेगामेयर, ऑप्शन डी ब्लास्टोडर्म. So the correct answer is option B. These are the blastomeres which are formed as a result of cleavage. Question 24. Which of the following is not the characteristic of cleavage? Option A decrease in size of blastomere, option B rapid mitotic division, option D differentiation of blastomere, option D interphase of short duration. So the correct answer is option C. Differentiation of blastomere is absent in cleavage. Question 25. The type of cleavage in the centroacetal egg. Option A spiral cleavage, unequal holoblastic, option D discoidal, option D superficial. So the correct answer is option A. It is spiral cleavage which is present in centroacetal egg. Question 26. In mesoacetal egg, the cleavage is option A meroblastic, equal holoblastic, option C discoidal, option D equal holoblastic. So the correct answer is option B. It is unequal and holoblastic. Question 27. What is true about the cleavage? Option A size of embryo increases, option B size of cells increases, option C size of cells increases, option D size of embryo decreases. So the correct answer is option C. Size of cells will increase due to repeated mitotic division. Question 28. First cleavage in the frog is option A holoblastic and vertical, option B holoblastic and transverse, option C
meroblastic and vertical. Option D, meroblastic and transverse. So the correct answer is option A. It is holoblastic and vertical. Question 29. Amount of yolk and distribution are changed in the egg. Which one is affected? कि अगर amount of distribution, amount of yolk या इसकी distribution change हो जाए egg के अंदर तो कौन सी चीज़ affected होगी? Option A, pattern of cleavage, formation of zygote, number of blastomere. Option D, fertilized. The correct answer is option A, pattern of cleavage. Question 30 is, in an egg, the type of cleavage is determined by option A, amount and distribution of yolk. Option B, number of egg membranes. Option C, shape and size of sperm. Option D, the size and location of nucleus. So the correct answer is option A, कि अगर एग के अंदर जो क्लीवेज है वो डिसाइड की जाती है अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक की बेस पर। तो ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट MCQs अबाउट क्लीवेज, जो कि अक्सर इनमें से एक या दो क्वेश्चन लाजमी तौर पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लिहाजा मेरा आपको ये मशवरा है कि एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें।